Hi everybody, welcome back to yet another video on data types and variables, and I promise this is going to be the last one of them. Even this video is not directly about data types and variables, sort of. So इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे कुछ ओवरलोडेड ऑपरेटर्स जो कि कॉमनली हमारी डेवलपमेंट में काफ़ी काम आएंगे. फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग concatenation और parsing, stuff like that. Good stuff. समथिंग जो कि आगे वाले लेसन्स में हमारे काम आएंगे, स्पेशली इन फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स व्हाइल यू आर हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स और यू वांट टू पार्स स्टफ, cool stuff. So let's dig into our current lesson. So firstly, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने टाइप ऑफ देख लिया, हमने ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स का डिफरेंस देख लिया. अब हम देखते हैं हाउ वी कैन evaluate expressions. Now it's very easy to evaluate mathematical expressions in terms of operators. वो तो तमाम programming languages के हाँ consistent है, because if you want to add stuff you just need to do 2 plus 2. You want to multiply stuff, multiplication operator, divide stuff and minus stuff. तो ये सारी चीज़ें तो obviously these are consistent across programming languages. Now what if I want to use these operators in certain scenarios? For example, string concatenation. So let's say I have a variable or a, and it says hi, my name is, and then I have another variable b which says Aves, right? So what if I want to concatenate both of these? So what I'll do something like this, plus b. तो मुझे रिजल्ट मिलता है hi, my name is Aves. We don't have any space, but we can add a space just like this. So that's how you can use plus operator overloaded scenario, plus operators overloaded scenario with strings. I got that right. Yeah. Now प्लस ऑपरेटर सिर्फ आप स्ट्रिंग्स की कंकैटिनेशन में यूज़ नहीं कर सकते, इसको आप टाइप कास्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. कैसे? लेट्स से यू हैव अ वेरिएबल दैट हैज़ एन इंटीजर स्ट्रिंग स्टोर्ड. नाउ very carefully, again I'm repeating it, integer string, इसका मतलब ये have a string which has a particular integer in it. Let's get rid of variable a here, so we just have variable b. Now if I print out b, तो obviously मुझे 2 ही कंसोल पे प्रिंट आउट होता नज़र आएगा. बट इफ़ आई ऐड द प्लस ऑपरेटर और यूनरी एडिशन ऑपरेटर in front of this particular variable, so you see color change हुआ है in console. See it again. So this is a string, this is an integer. Let me do it again. String, integer, string, integer. So basically your integer string has been typecasted into just integer or number. चूँकि हमने type of अभी use किया है, we can use type of within this scenario. So before casting my variable b, let me do type of b and I get a string. Let's say I use another variable c and I use plus b here, right? And let me add another console statement which says type of c. So now you see that how you can cast these variables into different formats. लेकिन इस सिनेरियो के अंदर if you just see the code, just visualize this code snippet, and you'll find out that something is not right. Maybe some of you might be okay with it. People like me who are just who like things in an organized manner, they might have some reservations. क्योंकि this plus operator is used tremendously when you're writing or evaluating expression. हो सकता है आप इंटीजर्स को evaluate कर रहे हो सकता है आप इसी स्क्रिप्ट के अंदर string concatenation यूज़ कर रहे हो, और वहीं पे आप ये plus operator अगर type casting के लिए यूज़ कर रहे हैं, then it can be a bit hard in terms of readability for a few other fellows of yours. तो
इस रीडेबिलिटी को इम्प्रूव हम किस तरह कर सकते हैं? वेल, जावास्क्रिप्ट ऑफर्स यू डिफरेंट फंक्शंस दैट यू कैन यूज. Functions like parse. Whoa, sorry, I accidentally pressed caps lock. Parse int. So you can use this method to, it's a better practice to use parse int. It's more verbose. मतलब थोड़ा सा आपको एक देख कर अंदाज़ा हो जाता है कि ओके, मैं पार्स कर रहा हूँ, एक इंटीजर को पार्स कर रहा हूँ, instead of using plus variable, which can get lost, or it can be missed due to some sort of human error while you're reviewing the code, or you're writing the code. So that can give rise to different readability issues or even bugs. So when you have something better, why not use it? और गिवन कि आपके पास अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो, लेट्स से आई हैव 2.2.2.222, अगर मैंने इसको पार्स करना है, सो लेट्स प्रिंट आउट द वैल्यू ऑफ सी हेयर. सो आई विल गेट 2. अब है तो फ्लोटिंग नंबर, लेकिन वैल्यू इंटीजर में आ रही है क्योंकि मैं यहाँ पार्स इंट कर रहा हूँ. So JavaScript offers you another method which helps you parse a floating point number. So you can use that. Now these functions, these parsing methods, ये आपके काम आएंगे in our last lesson, जो कि हम week 4 में cover करेंगे, which revolves around objects and how you can operate on objects. So that's pretty much it from this lesson. So I hope you learned something new, and I'll see you in the next video. Thank you so much for watching.